Okay, good evening everyone. So I hope all of you remember what we have studied in last class. Tell me, सबको याद है? Last class में हमने क्या-क्या revise किया था? Tell me. Ohm's law, till Ohm's law, right? And we revised. We started actually series and parallel circuit. Yes or no? Tell me. We started series and parallel circuit, right? Okay. Yes. Okay. Very good. Okay. So let's start with that only. Okay, let's start with series and parallel combination. So we were discussing that when we talk about series and parallel combination, जब हम लोग series और parallel की बात करते हैं, okay, so the condition that we should keep in our mind is that when you talk about resistance, suppose these are the resistance which is connected, okay, with each other, okay, so instead of thinking that the resistance should be connected with each other, we should think that the current, right, passing through the resistance should be same. Okay, for example, I've already given you this example in last class, है ना? यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, right? ये मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ. यहाँ पे ये कनेक्टेड है, बट अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, right? Still ये कनेक्टेड है, बट ये तीनों सीरीज में नहीं होगा, है ना? Because current same नहीं पास करेगा. Got it? So this is one thing which we have to keep in mind. Okay, which we have to keep in mind. राइट नाउ इसका प्रूफ आता है हमारे एग्जाम में. हमारे एग्जाम में इसको प्रूफ आएगा कि कैसे हम लोग सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रूफ, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, इट इज बेसिक ऑफ, टेल मी, इट इज बेसिक ऑफ ओम्स लॉ, है ना? सो आई कैन से दैट ओके, this E which is net potential between point A and point B, right? Net potential difference between point A and point B, okay, is equal to V1 plus V2 plus V3. लिख सकते हैं हम लोग, right? है ना? और using Ohm's law, V1 is IR1, V2 is IR2, and V3 is IR3. ठीक है? Right? And then I'm writing E is equal to V1 plus V2 plus V3. So, right? So I can say, okay, when you talk about this circuit, I can remove all the three resistance. Okay, I can remove all three resistance and use one resistance. एक ही resistance use करेंगे हम. Now this is called as R equivalent, right? And the current will be same. Now current will be same, obviously, because the battery is same, right? So current should be same. Okay, so IR equivalent is equal to IR1 plus IR2 plus IR3, right? So I can say R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. This is in series, ठीक है? ये series में होता है ना? This is in series. Okay, now when we talk about parallel, right? Now think about it. In series, right? Think about it. In series, resistance will increase or decrease. Tell me, resistance, equivalent resistance will increase or decrease. Think about it. Everyone, tell me. Increase, it will always increase. So just keep this in mind that when we talk about resistance in series, it will always increase because add up हो रहा है ना, right? It will add up हो रहा है, ठीक है? So I can say the current will be same throughout all resistance. The effective resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. Applied voltage is sum of all the voltages between the resistance, okay? And maximum power consumed, okay, right, will be there in which the resistance is highest. Okay, got it? Right, got it? Now uska disadvantage kya hai? Tell me, what is the disadvantage? Think about it, right? Before reading, think about it. What do you think about the disadvantage? Do we use circuits in series in our home? Tell me, हम लोग अपने घर में series में लगाते हैं क्या appliances को? No, right? Why? Because अगर मान लो एक फ्यूज हो गया या एक खराब हो गया तो मेरा पूरा पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा. Yes or no? That's what happens, right? मान लो तुम ट्यूब, मान लो तुम्हारा काम करना बंद कर दिया, so connection break हो गया, so all the appliances will stop working. Okay, that's the first thing. What is the second issue? Tell me, what is the second issue? Think about it. What is the second issue? Second issue is the voltage drop. Okay, when we talk about different appliances,
right? They need different current, not voltages. Okay, they need same voltage. जब हम बात करते हो टीवी की या बल्ब की या किसी भी चीज की, राइट, वोल्टेज हमारा सेम होता है कि नहीं? वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, राइट, बट पावर क्या होता है? कम होता है या ज्यादा होता है? मींस करंट चेंज करता है एज कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स. गॉट इट? राइट? क्लियर है? ओके, so these two points are written over here which I explained. Okay, now let's see this. Let's see this simple problem, right? As I told you, we will discuss simple से लेकर last तक करेंगे, ठीक है? And I hope all of you are solving exemplar. Tell me, exemplar कर लिया ना सबने? I'm expecting कि एग्जाम्पल अब तक सबका हो चुका है. लाइट का, लाइट इज फिनिश्ड, राइट? लाइट खत्म हो चुका है ना, बस कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते हैं उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग एक दिन, राइट? आई एम अज्यूमिंग तुम लोग का एग्जाम लाइट खत्म हो चुका है बिकॉज 2 वीक्स इज ओवर, राइट? 2 वीक इज ओवर, है ना? हम लोगों ने 2 वीक का टाइमलाइन दिया था लाइट के लिए, ठीक है? वेरी गुड. सो अगर तुम लोग का हो गया लाइट तो वेरी गुड, बिकॉज आज मैं लाइट के सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का होमवर्क दूंगा, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग कि जो सिंसियरली फॉलो कर रहा है प्लान वो लाइट खत्म कर दिया अब तक, ठीक है? नाउ दिस इज वन सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है? वन सिंपल प्रॉब्लम. कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इजी है ना इसका. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 15 ही हो गया है, राइट? सिंपल दिया हुआ है. एंड पोटेंशियल इन ईच okay, sorry, I got a call, that's why whenever I get a call my gets muted. Okay, so this is easy question ना, this is easy question. ऐसे question बन जाएंगे, tell me, ऐसे question बन जाएंगे, easy है, निकल जाएगा, right? किसी दिक्कत है ऐसे questions में? नहीं ना? Everyone can solve question like this? Yes, raise your hand, thumbs up. सबसे बन जाएगा ऐसा question? Very good. So these are very easy level, these are easy level. Okay, now the second combination that we saw in last class was parallel combination. Now जब हम बात करते हैं parallel combination की, so we have taken the example of pipes, if you remember, right? कि अगर किसी पाइप में पानी आ रहा है 50 लीटर एंड वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना? 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. The sum of all the 3 pipes should be equal to 50. Yes or no? Tell me. Yes or no? As simple as that. बहुत ही simple concept है, right? ऐसा तो नहीं है कि जंक्शन में पानी खत्म हो जाएगा, right? ऐसा तो है ही नहीं, right? हाँ, so यहाँ पे हम बोल सकते हैं same thing, right? That current, if the current is I, then if it is dividing into 3 branches, from this junction, so I can say I is equal to I1 plus I2 plus I3. ठीक है? I is equal to I1 plus I2 plus I3. Yes or no? ठीक है? Now, when you talk about these 2 points, think about it, right? Okay, when you talk about these 2 points, I can say between these 2 points, the voltage difference is same. Yes or no? Yes or no? ठीक है? So I can say, okay, I'll just write the first expression, which is I is equal to I1 plus I2 plus I3. I is equal to I1 plus I2 plus I3. Okay. Now, since the voltage difference between these 2 points A and B are same, I can say, right, the current I1 is in resistance R1. So V is equal to I1 R1. So I1 is equal to V by R1. In the same way, I2 is equal to V by R2. I3 is equal to V by R3. So I'll just put it over here. V by R1, V by R2, V by R3. Okay, got it, right? And since I, instead of these 3, I can just put one R equivalent. So I is equal to E by R equivalent, right? Which is basically V only, na, these 2 points. Okay, so V by R equivalent is equal to V by R1, V by R2, V by R3. So 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ठीक है? So generally हमें दो resistance पूछा आता है. So if I'm having only 2 resistance, so 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. ठीक है? Now if you solve it, so we'll get 1 by R equivalent is equal to R1 plus R2 by R1 R2.
ठीक है, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट फॉर्मुलेस अगर तुमको याद रहेंगे ना तो स्पीड बढ़ जाएगा. सो आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2. ठीक है, राइट, ये हो गया है ना, कोई दिक्कत इसमें ना. अगर तुमको I1 निकालना है, I1, व्हाट इज I1, टेल मी व्हाट इज I1. I1 is equal to VR1. I1 is equal to V by R1. Yes or no? Yes or no? ठीक है, ओके, यस. So advantages, we know the advantages of the circuit, right? Whenever we use appliances in our home, it is always in parallel because the circuit will not break, right? Okay, got it, right? Now, when we talk about this series and parallel combination, right? It is not necessary that all the circuits will be either in series or in parallel. ये दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं है कि सारे circuit series और parallel होंगे. Okay, but हमारे syllabus में they will be parallel, but we will be studying some special cases. But हमारे syllabus में ना almost क्या होंगे, सीरीज पैरेलल वाले होंगे. ठीक है, बट हम लोग एक दो टाइप देखेंगे ना. यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो, I'll give you 1 minute. Can you solve it within 1 minute? Try to solve this. Okay, everyone, let's see. Right now, if you see A and B, okay, then start with this section, right? This 2 and this 4 are in series, right? So 2 and 4 will become 6. Agree? So I can say the circuit will become like this. Circuit will become like this. Yes or no? Yes or no? Right? Okay? Yes. Now, 6 and 6 are in series or parallel? Tell me, 6 and 6 are in series or parallel? Between AC, right? Both are between AC. So I can say, okay, they are in parallel, right? So yes. Now, when these two are in parallel, okay, now we know that in parallel, the resistance decreases. Okay, so it will be 6 into 6 by 6 plus 6, or just 6 by 2, right? So it will be 3. Okay, so if you see this further, then this will become like this, right? This will become like this, 3. Okay, now again, between A and B only. Now this 3 and this 7 are in series step by step. This 3 and this 7 are in series. Yes or no? Right? You should not hurry, okay? Step by step. Then 10. This will become 10, okay? 10. Now see how most of you were wrong, right? This 10 and this 10 are in parallel now. So the answer is 5. So most of you are wrong, right? Yes or no? So do not be hasty, okay? Follow the steps. I hope all of you got the clarity. Tell me, yes or no? Yes or no? Got it? Checked your mistakes? Checked your mistakes? Where you did mistake? Okay, very good, right? Anyone have any issues in this? Tell me, anyone have any issue in this? Anyone? No, right? Clear? Clear? Okay, very good. Okay, next. Let's see next problem. Okay, so these are the points that you have to remember. Now think about it, right? Think about it. Right? Suppose we have n resistance. Suppose we have n resistance. Each of resistance R. How will we combine them to get maximum and minimum effective resistance? So it is easy, right? It is easy. We know that if we are combining them in series, right? If we are combining them in series, then we will get maximum resistance. Yes or no? Tell me. Yes or no? Right? But if we are combining them in parallel,
then we will get minimum resistance. Agree? Agree? Okay. Now let's try to solve this, everyone. Let's try to solve this two problem, right? Let's try to solve these two problems first. Okay, first solve this one. Try it step by step. First try question number 1. Okay. Okay. I hope all of you have tried. I hope all of you have tried. Yes or no? Tell me. This is very important chapter. Okay. So देखो क्या होता है यहाँ पे देखो. First of all, what we have to do step by step. Between A and B, these two are in, tell me, parallel. So R equivalent would be what? R equivalent 1. R equivalent 1 between A and B will be 2 into 3 by 2 plus 3. As simple as that. है ना? So it will be 6 by 5, which is 1.2. 6 by 5 is 1.2. Yes or no? Tell me. Yes or no? Okay. Now it is in series with 6 ohm. So total R equivalent 2. Total R equivalent is equal to 1.2 plus 6, which is 7.2. Got it? Now, when we talk about this I in the circuit, current in the circuit, so I is equal to V by R, which is 6 by 7.2. है ना? Right? Now, 6 by 7.2 is 1 by, tell me, 1.2. Agree? ठीक है? Clear है ये? Anyone have any issue in this? Right? Now, we know that the equal resistance between A and B is what? 1.2. Resistance between A and B is 1.2. Step by step. यहाँ तक सबको समझ में आया? बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया? हाथ चालू, thumbs up. If everyone has understood till this point, please raise your hand. Thumbs up होना चाहिए. ठीक है? अब बताओ, can we find voltage drop between A and B? VAB? Tell me, what is VAB? Step by step. What is VAB? बताओ, what is VAB? Yes, very good. Now, think about it. VA is equal to, if you think VA, according to Ohm's law, it should be what? V is equal to IR, right? So I into R equivalent 1, because R equivalent 1 between A and B is 1.2 now. Yes or no? Tell me. Yes or no? Right? Yes or no? Tell me. So what is I? What is I? What is I? Tell me. 1 by 1.2 into, what is R equivalent between A and B? It is 1.2. 1.2. So बताओ VA कितना हो रहा है? What is VA? 1 volt. Yes or no? Tell me. 1 volt. Agree? VAB is equal to 1 volt. VAB, right? Not VA, just VAB. VAB 1 volt. सबको समझ में आया यहाँ तक? सबको समझ में आया ये पॉइंट कि VAB 1 volt है. The potential of between VAB is 1 volt. Clear हुआ ये? Clear हुआ? Right? समझ में आ रहा है ना? इसमें बहुत दिक्कत होता है. Now अब तुम आराम से I1 निकाल लोगे. What is I1? I1 is equal to V by R, right? I1 is V by R, है ना? Right? और V कितना है? 1. R कितना है? 2. So half ampere, 0.5 ampere. Actually it's 0.5 ampere. ठीक है? Clear हो गया अब? Concept clear हो गया? The potential between A and B 1 volt. Okay. Potential between A and B 1 volt, और current 1 by 2 ampere. 1 by 2 ampere. Unit मत लिख छोड़ना, ठीक है? Half marks कट जाएगा. Okay. Now second one. How many of you solved second one? Tell me. How many of you solved second one?
किसको याद है? हाथ चालो, किसको किसको याद है? सेकंड वन क्या हुआ आंसर? व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड वन? I've explained this question in foundation class, I guess. फाक तुम भूल गए लगता है। ओके, नो जयिता, ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। ओके, नाउ पॉइंट ए, टेक पॉइंट ए को पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है, नो रेणुका, पॉइंट ए पकड़ लो, ठीक है, पॉइंट ए पकड़ लो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आई हैव, तुम लोग में से किसको याद है कि ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है? बताओ किसने, किसको किसको याद है? राइट, बोथ बोथ फाउंडेशन और बोर्ड्स दोनों में करवाया है मैंने ये क्वेश्चन, दोनों में करवाया है, ठीक है। आई हैव टेकन वन क्लास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बिटवीन, जब सेशन शायद नहीं था बीच में एक बार, ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन सबको करवाया है। नो, नॉट इवन शॉर्ट सर्किट, राइट, थिंक अबाउट इट। अच्छा एक चीज बताओ, थिंक अबाउट इट, इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे वोल्टेज सेम होगा कि डिफरेंट? टेल मी, वोल्टेज सेम होगा कि डिफरेंट? थिंक अबाउट इट, सोचो एक बार, सोचो, यही बात है ना, सोचो, सेम और डिफरेंट, बताओ। अभिषेक वाई डिफरेंट? वाई डिफरेंट? कोई रेसिस्टेंस नहीं है ना, जब रेसिस्टेंस ही नहीं है तो डिफरेंट क्यों होना चाहिए? आस्क योर सेल्फ, राइट, आस्क, इफ देयर इज नो रेसिस्टेंस, राइट, तो डिफरेंट क्यों होगा? नहीं होगा ना। अगर यहाँ पे मुझे 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, 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 राइट, ठीक है। मींस अगर करंट यहाँ से पास कर रहा है, करंट ऐसे पास कर रहा है तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, राइट, यहाँ से ऐसे ऐसे स्प्लिट होगा, मींस एक्चुअली ए से एक नहीं 3 रेसिस्टेंस निकल रहा है, यस और नो, टेल मी। ए से ये रेसिस्टेंस और ये दोनों रेसिस्टेंस निकल रहे हैं, बिकॉज दिस पॉइंट इस पॉइंट को जोड़कर यहाँ ले आओ, ये पॉइंट पकड़ के यहाँ उठा लो, तो यहाँ से 3 निकल रहा है ना, यस और नो, टेल मी, ठीक है। और तुम देखोगे ये पॉइंट डी और पॉइंट बी भी सेम पोटेंशियल पे है, यस और नो, टेल मी, सबको समझ में आ रहा है? ये पॉइंट डी और पॉइंट बी भी एक ही पोटेंशियल पे है एक्चुअली में, मतलब तीनों जुड़ भी रहा है एक पॉइंट पे, जुड़ भी रहा है एक पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट डी। अब बताओ ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? टेल मी, व्हाट इज दिस कॉन्फ़िगरेशन, सीरीज और पैरेलल? पैरेलल। अब बताओ आंसर क्या होगा? ठीक है, क्लियर है सबको? एवरीवन इज, या एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस कॉन्सेप्ट, यस और नो? सबको समझ में आया कि अगर रेसिस्टेंस लाइन बाय लाइन जुड़ा हुआ भी रहेगा ना, जुड़ा हुआ भी रहेगा तो वो सीरीज में नहीं होगा, जरूरी नहीं है वो सीरीज में हो, ठीक है। क्लियर, राइट, नाउ मोशन आई वन आई टू, ओके,
you need to find, I need to find इनके पहले voltage find करना पड़ेगा and all those things, है ना? That you can do, right? You can find I1, I2, but there's a shortcut method. Why? See, between A and B, A and B, voltage is going to be same, yes or no? Yes or no? Tell me. And we know that V is equal to IR. V is equal to IR. So can I say if voltage is same, then I1 R1, right, is voltage across AB, and in same way V is equal to I2 R2. Agree? Tell me, agree? But both are same, both are same. So can I say, okay, I1 R1 is equal to I2 R2, right? So using this, can I say I1 by I2 is equal to R2 by R1? Right? Makes sense ना? Forget about the formula. Forget about the formula. तुम normally सोचो, अगर दो वायर है तुम्हारे पास, एक में रेजिस्टेंस कम है और एक में रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट किसमें ज्यादा जाएगा? Think about it. Normally सोचो. Forget about the formula. Right? Conceptually सोचो. तुम्हारे पास दो वायर है, एक का रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक का रेजिस्टेंस कम है. ठीक है? So करंट किसमें ज्यादा जाएगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा. Make sense? Yes or no? Right? Low resistance. Anyone have any issue in this? बताओ, किसी को दिक्कत है? नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं है. Because make sense ना, current is inversely proportional to resistance, है ना? So I can say in a parallel circuit, right? In a parallel circuit, the current distribution will be inversely proportional to resistance. Okay, got it? Tell me, got it? Yes or no? Yes or no? Right? Okay, है ना? So हम लोग यहाँ पे ये यूज कर सकते डायरेक्टली, और I1 I2 डायरेक्टली I निकालने के बाद भी निकाल सकते हैं. ठीक है? Okay, right? So I hope this is what we have been using. हम लोग यूज भी करते आ रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स में. So ये न्यूमेरिकल ट्राई करो सबको ये न्यूमेरिकल. Everyone try this. Right? So I can say I1 plus I2 is equal to 6. ठीक है? Very good. And I1 by I2, right? Suppose this is I1, and this is I2. So I1 by I2 is equal to what? I1 by I2 is ulta, 20 by 10, right? Which is I1 is equal to 2I2. Put कर देंगे यहाँ पे, है ना? So 2I2 plus I2 is equal to 6. So I2 is equal to 6 by 3, 2 ampere, right? I2 में 2 ampere, makes sense. So अगर इसमें 2 है तो इसमें 4 है. Clear? Right? Easy है. This is easy problem. Everyone is getting the concept cleared? ठीक है ना? क्रिस्चॉफ्स लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्रिस्चॉफ्स लॉ, बट ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए नहीं है. ओके, राइट? बट आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर क्रिस्चॉफ्स लॉ. ठीक है? तो वो हम लोग नहीं करेंगे अभी, बोर्ड्स में नहीं है. ओके, राइट? नाउ दिस इज, we will talk about other problems also. हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, but we will complete the revision part first. Now after this, after series parallel, what was the next topic? Tell me, after series parallel, what was the next topic? Heating effect of electric current. Yes or no? Tell me, yes or no? Okay, yes, very good. Now this is one of the blessing, or tell me, I can say it is one of the blessing or curse of resistance. Yes or no? Tell me, yes or no? Right? Because when we talk about current, when current is passed through any resistance, it dissipates energy. It dissipates energy, right? है ना? Right? So when energy is dissipated, it is dissipated in which form? Either light or heat, right? Tube light देख लो अपना, heater देख लो, है ना? So either light or heat. Okay. Now I want to know that how this electrical energy is converted into heat energy, right? So think about it. So this is very fundamental. ये derivation बहुत fundamental है. तुम लोगों को derivation नहीं पढ़ाया गया होगा, है ना? तुम लोग directly formula बता दिया गया होगा that this is the formula, right? Yes or no? है ना?
ठीक है, लॉजिकली अब सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तुम लोगों को वर्क डन का कॉन्सेप्ट पता है ना, वर्क डन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट तो हम लोग सीखे हैं, यस और नो, टेल मी यस और नो। वी नो दैट पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एग्री, राइट, एग्री। नाउ and charge is equal to what? Current into change in time. This is something that we know. Or delta q is equal to, or just q, charge flowed is equal to I into delta t. Anyone have any issue in this? Anyone have any issue in these two formulas? I hope all of you remember these two, right? Very good, Zan. Remember? Very good. Now think about it. I can say, we know, we studied in class 9 that whenever work is done, it is stored in kinetic energy or some other form of energy. Yes or no? Tell me. Right? Energy is conserved. That is something that we have studied in class 9th, that energy is always conserved. Now, तुम खुद सोचो, अगर चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे फोर्स लगा रहा है, राइट, वर्क डन हो रहा है। तो अगर वर्क डन हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी स्टोर होगा ना, या कहीं ना कहीं कंज्यूम होगा ना, या रिलीज होगा, है कि नहीं, राइट, ओके। Now this is actually into, now that energy which is consumed or used is converting into electrical energy. Now think about it. We know that when you talk about work done is converting into your heat energy, है ना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं, है कि नहीं, राइट। हम लोग मैक्रोस्कोपिक देख नहीं रहे कि कंडक्टर मूव कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, हम लोग माइक्रोस्कोपिक देख रहे हैं, राइट। तो जो वर्क डन है, दिस वर्क डन ऑन द चार्जेस is basically converting into heat energy, right? Got it? Tell me. Or just energy, just electrical energy, right? Work done is equal to electrical energy. हीट एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी में कन्वर्ट हो सकता है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, डजंट मैटर, इट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ना अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज, यस और नो, टेल मी यस और नो, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, बेसिक डेफिनेशन है वोल्टेज का, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक डेफिनेशन है। नाउ we know that q is equal to current into this change in time, or v is equal to ir using Ohm's law, है ना, v is equal to ir using Ohm's law। so put करते हैं, अगर ये दोनों put करोगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, w is equal to, right, w is equal to I into delta t into I into r, है कि नहीं। आगे तुम्हारा फॉर्मूला इजी था, बताओ, I square r delta t, yes or no, tell me yes or no, that is the formula, right, that is the formula of electrical energy। क्लियर हुआ ये कहां से आ गया, इजी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं समझ में आने वाला है, बहुत इजी है, राइट। नाउ ओके, now if this energy, if this electrical energy is converted into heat energy, okay, then we have to divide by mechanical equivalent of heat. J is basically mechanical equivalent of heat, okay, right, J is the conversion constant which is called as mechanical equivalent of heat, right, है ना। बिकॉज देखो अगर हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो आई नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, यस और नो, टेल मी यस और नो, और ये जो होगा वो जूल में होगा, दिस वुड बी इन जूल, right, so if you have to convert into calorie you have to divide it by 4.18, got it, okay, right, okay, so this is about energy, so I hope all of you remember this, okay. Now Joule's law, this is what we have been studying, right, Joule's law, this is what you are studying, right. So this is, yeah, this is basically the intuitive definition, that was your formula based derivation, and this is your intuitive formula, right. So when you talk about heat, so according to Joule's law, you have to write this in your boards, okay, the amount of heat produced in a conductor is
in a fixed time interval is directly proportional to current square, is directly proportional to current square. Okay, right? And it is directly proportional to resistance also. Okay, it is directly proportional to resistance also. Okay, got it, right? So if you combine these two, okay, right? And obviously अगर तुम एक घंटे को जलाओगे, just think about it ना, अगर तुम एक घंटे बल्ब जला रहे हो या हाफ एन आवर बल्ब जला रहे हो, obviously एनर्जी किसमें ज्यादा कंज्यूम होगा? थिंक अबाउट इट, लॉजिकली बताओ, अगर एक घंटे बल्ब जल रहा है और एक केस में हाफ एन आवर बल्ब जल रहा है, तो एनर्जी किसमें कंज्यूम होगा? ऑब्वियसली 1 आवर वाले में, राइट? गॉट इट? सो टाइम पे भी डिपेंड कर गया, है ना? दिस इज डायरेक्ट टाइम आल्सो. So if you combine all the three, then H is equal to I square RT joules. ठीक है, डेल्टा टी को टी लिखते हैं सिंपल. और पावर क्या हो जाएगा? पावर इज, टेल मी, एनर्जी पर यूनिट टाइम. So it is I square R, just I square R. Now this can be written as I into V also, or V square by R also. ठीक है, depending on which is given, depending on what is given. प्रियांशु, यही तो तुम लोगों का कंफ्यूजन है. कांस्टेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है प्रियांशु. ओके, गॉट इट, राइट? थिंक अबाउट इट ना. तुम लोग ये, जैसे प्रियांशु ने बोला कि सर अगर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया? राइट, अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहाँ हुआ? डिपेंड कर रहा है कि कांस्टेंट क्या है कि नहीं? कांस्टेंट क्या है और कौन ज्यादा वैरी कर रहा है. क्लियर है? ओके, ओके. So ये एक simple से example. I hope all of you have studied these, right? Simple example. Now application, we know we use this in electrical heaters, right? है ना, electrical heaters हो गया, oven हो गया, यहाँ पे use करते हैं. Yes or no? Tell me yes or no. So बस electrical heaters, electric bulb, electric fuse. Now electric fuse exam में आएगा, ठीक है? Electric fuse, the working of electric fuse will come into your exam, right? Clear है? So tell me, can anyone tell me how electric fuse works? अभी तो बहुत कम यूज होता है, but normally, right? Can you tell me how electric fuse works? जो बहुत ज्यादा करंट पास करता है ना, बहुत ज्यादा करंट पास करता है किसी सर्किट के थ्रू, राइट? तो फ्यूज क्या होता है? टेल मी. हीट कितना होगा? हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर. यस और नो? इफ high amount of current is flowing, then the heat generated would be more. Yes or no? Tell me. Yes or no? Right? And due to this, the fuse wire will melt. Okay, that is what you have to write. So I can say when large current, when large current flows through circuit, right, large amount of heat is produced. Due to this, right, fuse will melt and circuit is broken. Hence, it stops the current. तो कभी जब शॉर्ट सर्किट होता है, ध्यान दो, जब शॉर्ट सर्किट होता है, राइट, तो फ्यूज उड़ जाता है ना? शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ जाता है. कभी देखा है घर में? सुना है शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, लाइट कट गई, राइट? टेल मी. ओके, तो उसमें क्या होता होगा? अगर मान लो शॉर्ट सर्किट नहीं होता, अगर फ्यूज नहीं उड़ता, तो नहीं
Guys, my voice is fine or it's breaking? Tell me. Okay, ठीक है? Clear ये चीज? Now, see, I don't know if you have seen this or not, right? But it is generally advised to turn off all your appliances during lightning. Yes or no? Tell me. सुना है कभी मम्मी पापा ने बोला है कि सब कुछ बंद कर दो जब बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है तो, राइट? सोचे हो कभी क्यों होता है ऐसे? Yes. See, whenever we talk about, okay, yes. So I don't know, have you ever observed this or not, or have you ever seen this or not? But when I was in college, okay, there was lots of lightning. Okay, बहुत ज़्यादा बिजली होता था. So मेरे रूम का बल्ब उड़ गया, literally blast कर गया, right? Like because there was lightning very near to the college. Okay, because college have one like mountain kind of structure, right? Mountain type था थोड़ा सा, so बहुत ज़्यादा पास में होता था. So because of that electric discharge, yes, Abhiram, very good. Because of the electric discharge, right? Okay, your appliances can get damaged. Okay, that's why it is asked to turn off, right? Okay. Okay. Now, when we talk about power, we know that power is equal to what? Tell me. Power is equal to, generally power is equal to work done per unit time. Yes or no? हम लोगों ने पढ़ा है ना power ninth में. Power is equal to work done per unit time, right? Or energy per unit time, energy consumed per unit time. Okay. Now we have, yeah, we have derived, okay, that when you talk about energy, it is this, है ना? This I square RT or VI, right? So I'm having the formula of power as VI or I square R or V square by R or V square by R, depending on what is given. ठीक है? Depending on what's given. So generally अगर voltage constant है, generally अगर voltage constant है, तो ये use करो. Generally current constant तो ये use करो. समझ में आ रहा है? Okay. Okay. Now there's some. What is the unit of power? Tell me, what is the unit of power? Everyone, I hope all of you remember what is the unit of power? Watt, right? Watt, है ना? Watt, watt, kilowatt. They are multipliers, right? So 1 volt ampere, okay, because again current into voltage. 1 volt ampere is equal to 1 watt, right? Kilo is a multiplier which is 10 to power 3. Kilo is a multiplier which is 10 to power 3, है ना? Got it? Okay, right? Now this is one of the important information you have to remember. ठीक है, जब पहले की बात करते हैं ना, पहले जब हम लोग इतने टेक्नोलॉजिकल टर्म्स नहीं थे, इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, so we used to calculate the power by the power of horses, actually horses. ठीक है, right? So it's just a convention that we use. Okay, now we used to convert that in watt. Okay, then I can say 1 horsepower is equal to 746 watt. Calculation में तुम 750 भी ले सकते हो, but generally 746 होता है. ये क्वेश्चन पूछा आता है. Okay, got it? Okay, clear? Clear सबको ये? Okay, very good everyone. Now, next concept is electrical energy. So this is same, exactly same, right? Okay. Now,
when you talk about electrical energy, it is what? It is power into time, which is kilowatt hour, है ना? तुम लोग जब बोलते हो बिजली का बिल आता है तो देखते हो ना बिजली के बिल में 1 यूनिट 2 यूनिट लिखा रहता है. हाँ श्रीकर, ओके. अभी कार्ड्स और बाइक्स के लिए करते हैं, ठीक है, हॉर्स पावर. सो जनरली व्हीकल्स के लिए यूज होता है, जनरली व्हीकल्स के लिए यूज होता है आजकल. ओके, नाउ 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच? टेल मी, 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच? घर में उठता है ना, 1 यूनिट बिजली उठी है, 2 यूनिट बिजली उठी है, राइट? नोटिस करते होगे. यस, 1 किलोवाट आवर. वेरी गुड, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर. ओके, क्लियर है, राइट? ओके, this is the, yes, so this is the multiplier that you have to remember. ये लिख लो. नॉर्मली लोगों को याद नहीं रहता एग्जाम में, राइट? 1 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करो तो ये होगा, राइट? Okay, so this is 3.6 into 10 power 6 watt per what second, right? Okay, watt second or joules. So if you have to convert joules into kilowatt hour, if you have to convert joules into kilowatt hour, what you have to do? Tell me. Tell me. क्या करोगे? 3.6 into 10 power 6 से डिवाइड करोगे. Yes or no? Okay, got it everyone? Yes, very good everyone. Okay, very good. Now after this, right, we can summarize the concept, है ना? जनरली हम लोगों ने यही पढ़ा है. Yes or no? इतना ही पढ़ा है. Okay, yes, right, very good everyone. Now let's try to solve some problems based on this, right? एक दो problems करते हैं. Okay, then so let's see some problems, right? Let's see some problems. Generally आता है, ठीक है, देखते हैं हम लोग. What is an electric current circuit means? हो जाएगा. Define unit of current हो जाएगा, right? है ना? जिसमें confusion है तो पूछना. Calculate the number of electron consisting 1 coulomb of charge, right? 1 coulomb of charge. So हो भी हो जाएगा 1 coulomb divided by number of electrons, charge of 1 electron, right? So ये बहुत ही famous question है ना? बहुत ही famous question है. ये आएगा तुमको, ये 12th में भी आएगा. Sorry, हाँ 12th में भी आएगा, right? Basics. Okay, name the device that helps to maximize the potential difference across a conductor. Battery, that's what we do now. We use battery, right? What is meant by saying potential difference between 2 points is 1 volt? Tell me, right? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो क्या जवाब दोगे? Define volt, right? Define. The meaning of this is the work done to bring 1 coulomb of charge, right? 1 coulomb of charge from one point to other point, है ना? Right? If 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge from one point to other point, that is your 1 volt. Basic definition. Okay, basic definition, right? Now how much energy? So again, formula putting getting, right? तो ये सब बहुत ही short questions है, short questions. So short questions हो जाएंगे, right? Short questions हो जाएंगे. Okay, okay, very good. Now solve question number 13 everyone. Try to solve question number 13. 13 try करो, 13 try करो. By the way, sorry, I missed ammeter and voltmeter. Ammeter, I hope all of you know, ammeter is connected in series or parallel. Tell me, ammeter is connected in series and parallel. सबको पता है ना, ammeter is connected in series. Very good. Ammeter is connected in series. Yes, very good. And voltmeter is connected in parallel. है ना? Very good.
Try some 13th one. Easy है, बहुत easy है. Okay, so हो रहा होगा. स्टेप बाय स्टेप देखो, राइट. सो इस सर्किट में ठीक है, सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि इस सर्किट में putting an ammeter to measure the current resistor. Okay. Okay, right, putting, yeah. Now think about it. When you talk about the circuit, right, it will be something like this. Yes or no, ammeter और यहाँ पे voltmeter. So ammeter तो simple होगा ना, ammeter पे current कितना show करेगा? 0.24. That's what you, yes, that's what you also saw it, right? तुम लोग को भी यही आया है ना. और voltmeter, अगर इसके क्रॉस voltmeter लगेगा तो क्या होगा? V is equal to IR. V is equal to IR. As simple as that. Yes, very good, Dhruv, very good. Clear है, सबको clear है ना, right? तो ये सब सिंपल प्रॉब्लम्स है, ये सब सिंपल प्रॉब्लम्स है, ये सब सिंपल प्रॉब्लम्स बन जाएंगे ना. एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्लास खत्म होने से पहले एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है? एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं. Okay, try solving this problem everyone. Don't worry, I'll send these questions to you, ठीक है? बहुत सॉल्व है इसमें, बहुत एक्सरसाइज है, तो मैं इसको भेज दूंगा, राइट? यू कैन प्रैक्टिस एट होम. Okay, how many of you want me to discuss module again? Tell me. कितने लोगों को मॉड्यूल फिर से चाहिए डिस्कशन करने के लिए? 3 participants, tell me. Or I'll just discuss the good problems of module. See, from next, yeah, till next class, right? Okay, at least तुम लोग एक बार मॉड्यूल पूरा देख लो, ठीक है? मॉड्यूल देख लो, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मॉड्यूल के डिस्कस करूंगा, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस जो मैं दूंगा वो डिस्कस करूंगा इस शीट का, ओके, राइट? ओके, question number 14, last question of today's class, tell me. बताओ आंसर क्या है? Yes, very good, Ankit. Okay, let's see this, right? Let's see, everyone, let's see. So first is easy.
First is 2 ampere. Yes or no? First is 2 ampere. That's easy. Second is 5 ohm. Second is 5 ohm. Very good. That is also easy. That is, most of you solved it. Very good, Ankit. Very good. See, very good. Third is 18 volt. है ना? 18 volt. Clear है? सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, सबको समझ में आ गया? ओके, राइट, ओके, वेरी गुड. सो नेक्स्ट क्लास में लोग क्या क्या करेंगे मैं बता दे रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है? तो पहला जो चीज है वो एग्जाम्पलर का डाउट सॉल्विंग. एग्जाम्पलर लाइट है ना, लाइट एग्जाम्पलर का डाउट सॉल्विंग. सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी जो मॉड्यूल तुम लोग सॉल्व कर चुके हो उसमें गुड क्वेश्चंस का रिवीजन. ठीक है, इतना में ही टाइम हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है ना? और मैं अभी ये अपलोड कर दूंगा, ये अपलोड कर दूंगा और इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल अपलोड कर दूंगा. सो वी हैव 15 डेज एज प्लान, 15 डेज टू कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, आराम से हमारे पास टाइम है. 15 डेज हो जाएगा ना, हम लोगों ने प्लान किया था वैसे ही. ठीक है, सी जो प्लान से चल रहा होगा उसका हो जाएगा. ठीक है, 3 ही चैप्टर्स हैं. ठीक है, ओके. How many of you following the plan? Tell me, how many of you following the plan? Shrikar, Ankit, Renuka, Viram, Shreya, Anga, Nanya, you guys are following the plan? Everyone? Jaita, Preeti, Pravalika, Krish. Pravalika is here. Yes. Okay, very good. Right? Okay, रोशनी, धीरे धीरे करते रहो अभी से ना, तो ज्यादा लोड नहीं होगा. अंकित पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करो, पूरे प्रॉब्लम, मिनिमम नहीं होता है कुछ भी. राइट, फाइनल बोर्ड्स का फाइनल प्रिपरेशन है ना. ठीक है, 30 क्वेश्चन ही तो होते हैं एग्जाम्पलर में. ऑब्जेक्टिव को छोड़ दोगे तो 30 क्वेश्चन भी नहीं होते हैं. राइट, 30 ही क्वेश्चन तो है एग्जाम्पलर में, ऑब्जेक्टिव को छोड़ दोगे तो. ओके,